Students, welcome in the ACG and also welcome in the new class, that is 7th standard. This is your biology teacher, that is Dr. S.B. Sarkar. Okay. Now let us first of all discuss about our biology syllabus of the 7th standard, which includes the nutrition in the plants, nutrition in the animals, then respiration in the organism, reproduction in the plants, then transportation in plants and animals, then forest or lifeline, then weather, climate and adaptation of animal to the climate. These are the few chapters of your 7th standard biology chapters. Okay, among these chapters, let us start the first chapter, that is transportation in animals and plants. Transportation in animals and plants. Okay, as you know that each and every living organism is made up of the cell. So the cell is the basic and structural functional unit of the life. Okay, this is the smallest unit of the life. So each and every cell of the body requires a continuous supply of the many substances, like it requires continuous supply of oxygen along with the removal of the elimination of the carbon dioxide produced in the cellular respiration. Then each and every cell requires the energy, that's why it requires glucose and many other hormones, enzymes, minerals, water. So many substances are required to the cell for the sustaining or to live to survive. Okay, now how these substances, these various type of different substances are supplied to the cells. How this happens? So the multicellular animals are composed of tremendous or trillions of the cells. We cannot count them. For example, a few things about the human body. The human body contains near about 7.5 trillions of cells, and many of the cells are continuously destroyed and new cells are divided. This process is continuing and takes place throughout the life, but not every cell are divided. So there are few cells divided like epithelial cells. Okay, now how these substances are provided to these cells in the multicellular animals. First of all discuss करते हैं transportations in animals, means circulation in animals. Circulation in animals. Okay, how does the circulation takes place in animals? First of all, see what is circulation. Circulation is what? देखो 16th सेंचुरी में एक बायोलॉजिस्ट है जिनका नाम था विलियम हार्वे. विलियम हार्वे ने क्या किया, पहली बार उन्होंने एक ऐसा मेटल का पीस लिया छोटा सा. वो मेटल का पीस से जो पर वेन दिख रहे ब्लड वेसल्स उसे कट किया, और उस वेन में से, उस कट सेक्शन में से, उसमें से उन्होंने वो मेटल का पीस अंदर इंसर्ट कर दिया. थोड़ी देर बाद पता चला कि वो जो पीस है वो मूव होते गए यहाँ तक. देन उन्होंने इस वेन को यहाँ पे कट किया और यहाँ से वो मेटल का पीस निकाल लिया. ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने अपने बॉडी पे किया खुद. उनका नाम था विलियम हार्वे. अब इसका कंक्लूजन, व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट? इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि इस वेसल के अंदर जो कुछ फ्लूइड है, दैट इज रेड इन कलर, दैट इज ब्लड, इन्हें पता चला कि ये फ्लूइड एक जगह नहीं, ये फ्लूइड कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है थ्रू आउट द बॉडी. सो दैट इज कॉल्ड एज सर्कुलेशन. इसे ट्रांसपोर्टेशन या फिर सर्कुलेशन कहना है. ओके, उन्होंने बाद में पता चला कि ये जो पीस आगे गया है, इट इज बिकॉज ऑफ फ्लोइंग ऑफ दैट ब्लड. वो फ्लूइड जो है, जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड है, वो फ्लो हो रहा है, उसकी वजह से वो जो मेटल का पीस है वो एक जगह से दूसरी जगह गया है, और इसी को उन्होंने नाम दिया सर्कुलेशन. इसलिए हम विलियम हार्वे जो है इन्हें फादर ऑफ सर्कुलेशन कहते हैं. फादर ऑफ सर्कुलेशन किसे कहते हैं? विलियम हार्वे, जिन्होंने सर्कुलेशन क्या होता है बताया, और तब से मेडिकल फैकल्टी में बायोलॉजी में एक बड़ा हॉलमार्क, मिस लैंडमार्क मिला है. ये सबसे बड़ा कामयाबी बायोलॉजी की है सर्कुलेशन. ओके, there are two types of the circulation. One is the open circulation. Open circulation
and another is a closed circulation. These are two types of the circulation. One is open circulation and another is a closed circulation. So what is the difference between open circulation and closed circulation? See, what is open circulation? Open circulation is what? Say for example, this is a body of organism. ये कोई एनिमल्स है, उसकी बॉडी है, then ये उसका ब्लड पंपिंग ऑर्गन है. ओके, तो क्या होता है कि जब ऐसे ऑर्गेनिज्म में तो ब्लड पंपिंग ऑर्गन मींस हार्ट में से जो ब्लड निकलता है, द ब्लड रिलीज फ्रॉम द हार्ट इज पंप्ड थ्रू आउट द बॉडी बाय थ्रू दिस बॉडी साइनसेस और रैंडम डायरेक्शन से ब्लड फ्लो होता है विदाउट द वेसल्स. ये वेसल में से फ्लो नहीं होता है. ऐसा अगर सर्कुलेशन है किसी एनिमल में, दैट इज कॉल्ड एज ओपन सर्कुलेशन, इन विच द ब्लड और सर्कुलेटरी फ्लूइड flows openly, does not flow through the vessels. That's why this circulation, the such type of the circulation is called as open circulation. Getting this? Okay. Now, in this type of circulation, the circulating fluid, that is most commonly the blood, is flows throughout the body's cavities or body sinuses. A most common example of the open circulation is found in the arthropods. With arthropods. आर्थ्रोपोड्स मींस इंसेक्ट जो है, इंसेक्ट जो होते हैं, इंसेक्ट में ऐसा सर्कुलेशन. मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज कॉकरोच. इनमें कैसा सर्कुलेशन है? ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन. which type of circulation are formed in the arthropods or insect? Open type of circulation in which their body fluid, their circulating fluid is continuously flow throughout the body without the blood vessel. This blood is not flow through the blood vessels. They are directly randomly flows throughout the body in the different chambers of the body or different sinuses of the body. Okay. Now, what is a closed circulation? In which this such, for example, this is a body of an organism, and this is the blood pumping organ is heart. Okay. And now this is the vessel which is rising from the heart, and this is the branch of this vessel. Again, these are the branch of this vessel. Okay. Now, see, consider that this is the heart. If the blood flow throughout the body, but through the vessels, means blood closely circulate हो रहा है. So such a type of circulation is called as closed circulation. Closed circulation is what? The circulation in which the circulatory fluid, that is the blood, is flow through the closely, compactly through the blood vessels. So such type of circulation is called as closed circulation. So what are the examples of closed circulation? All the higher vertebrates, including the mammals also. हमारे बॉडी में जो सर्कुलेशन है वो कैसा है? क्लोज सर्कुलेशन है. मीन्स ब्लड फ्लोज थ्रू द वेसल्स लाइक ब्लड वेसल्स लाइक आर्टरीज, आर्टरियोल्स, वेन्स, वेन्यूल्स एंड कैपिलरीज. These are the blood vessels. इस ब्लड वेसल्स के थ्रू जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, मीन्स ब्लड बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो रहा है, लेकिन कैसा? क्लोजली सर्कुलेट हो रहा है. तो सच टाइप ऑफ सर्कुलेशन आर कॉल्ड एज closed circulation. Getting this? This is the main difference between open circulation and closed circulation. Okay. Now such type of circulation found in the molluscs, such as it's also found in some molluscs and some arthropoma also shows the closed type of circulation, closed type of circulatory system. Okay. Now discussing about the body fluid. So एनिमल्स के बॉडी में ये जो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है, जो ट्रांसपोर्ट करती है डिफरेंट सबस्टेंसेस को, द सिस्टम व्हिच इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिफरेंट सबस्टेंसेस फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस ऑफ बॉडी इनसाइड द बॉडी. व्हाट इज द मेन ऑफ द सर्कुलेशन टू फुलफिल द डिमांड ऑफ ईच एंड एवरी सेल. So this system which is mainly concerned with the transportation of the different substances, this system present in our body, this system is called as blood vascular system. It is called as blood vascular system, or this system is also called as cardiovascular system. Cardiovascular system. Cardiovascular system, or also called as blood vascular system, also called as circulatory system.
तो ये जो हमारे बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम है ये किससे बने हैं? इट कंप्राइजेस ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और cardiovascular system or circulatory system of our body comprises blood. It includes blood then which flows through the blood vessels. It does blood vessels and third one is a heart. So our blood vascular system or circulatory systems consist of mainly three components. These three components are blood, then blood vessels and the heart. ओके तो इस चैप्टर में हमें तीन कंपोनेंट डिस्कस करने हैं. व्हाट इज द ब्लड, देन ब्लड वेसल्स एंड व्हाट इज द हार्ट. ओके नाउ फर्स्ट डिस्कस करते हैं ब्लड. व्हाट इज द ब्लड? रिमेंबर दैट ब्लड मींस व्हाट? ब्लड इज a fluid connective tissue. Fluid connective tissue. Remember that. It is a connective tissue. Remember that there are four types of the tissues present in animal bodies. In our body, there is four types of tissues include epithelial tissue, then muscular tissue, nervous tissue, and connective tissue. These are the four types of tissue. But what is a tissue? Tissue means a group of the cell which are belonging to the same embryonic origin. ऐसा सेल का ग्रुप कि जिनमें सभी सेल के एम्ब्रियोनिक ओरिजिन कॉमन है, मतलब उनका जो ओरिजिन है वो कॉमन है. उस ग्रुप को हम टिश्यू के क्या कहते हैं? उस ग्रुप को हम सेल के ग्रुप को कहते हैं टिश्यू. सो ब्लड इज वन ऑफ द टिश्यू. इट इज बिकॉज ऑफ इट कंटेन सेल्स. ब्लड के अंदर सेल्स है इसलिए ब्लड क्या है? टिश्यू का सेल्स का ग्रुप, इसका मतलब टिश्यू है. विच टाइप ऑफ टिश्यू? कनेक्टिव टाइप ऑफ टिश्यू. विच टाइप ऑफ टिश्यू? Connective. It is in the fluid form now. It is always circulating. That's why it is a fluid connective tissue. Right? Blood is a fluid connective tissue and one of the softest tissue of the body. Softest tissue of the body. Blood is nothing but the softest tissue of the body and is a fluid connective tissue. Okay? Blood is derived from the origin of blood. Origin of blood is mesodermal. What is mesodermal origin? Remember that during the embryonic development means what? जब हम लोग हमारे मदर के यूट्रस में डेवलप होते हैं, जब कोई बेबी उसके मदर के यूट्रस में डेवलप होता है. So this development is called as embryonic development. So this stage is called as embryonic stage. During this stage, there are three layers of the cells are formed. These three layers of the cells are ectoderm, mesoderm, and endoderm. So entire part of the body or entire organs or organ systems of the body or cells of the body or system of the body are derived from these three layers of the cells. It may be the ectodermal, or it may be mesodermal, or it may be the endodermal. Okay, so among these three germinal layers, the blood is derived from entire circulatory system, which include blood, then blood vessels, and heart. Both three components of the circulatory system are derived from the mesoderm. These are derived from the mesodermal origin. Remember that entire circulatory system, which also includes lymphatic system, also lymphatic vessels, and the lymph nodes also. These are also components of the circulatory system. Okay, so blood is a mesodermal in origin and is a fluid connective tissue and one of the softest tissue of the body. Okay, this is the origin of the blood. Now, general properties of the blood, volume of blood. अब ब्लड का वॉल्यूम कितना होता है? एक पर्सन ऐसा हेल्दी अगर अडल्ट हम देखते तो उसके बॉडी में ब्लड कितना होता है? नियर अबाउट 4.5 to 5.5 लीटर. दिस इज द नॉर्मल काउंट ऑफ द ब्लड. इट इज अगेन डिपेंड ऑन द बॉडी मास. ओके, कोई ऐसा बहुत लीन थिंग रहता है तो उसके बॉडी में ब्लड का अमाउंट भी कम रहेगा. कोई ऐसा बेल के जैसा रोबस्ट रहेगा तो उसके बॉडी में ब्लड भी ज्यादा ही रहेगा. ठीक है, दिस इज नॉर्मल वॉल्यूम. देन पीएच ऑफ ब्लड. ब्लड का पीएच कितना होता है? पीएच ऑफ ब्लड जो है दिस 7.4. दिस इज द पीएच ऑफ ब्लड 7.4.
7.4 मीन्स ब्लड कैसा है, अल्कलाइन है, अल्कलाइन नेचर, अल्कलाइन नेचर ऑफ द ब्लड, इसका पीएच होता है 7.4. देन नेक्स्ट डेंसिटी ऑफ ब्लड, ब्लड इज स्लाइटली हेवियर देन द वाटर, ब्लड ये वाटर से ज्यादा हेवी होता है, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है. देन द कलर ऑफ ब्लड, रिमेंबर दैट कलर ऑफ ब्लड, कलर ऑफ ब्लड आप अगर बोलते तो आप सब बोलेंगे कलर ऑफ ब्लड इज रेड, ओके, बट नहीं, ऐसा नहीं होता. कलर ब्लड जो है ब्लड दो टाइप्स होते हैं, एक होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड अनदर इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. These are two types of the blood, oxygenated blood and deoxygenated blood. Oxygenated blood means what? Oxygenated blood means the blood which contains oxygen, and deoxygenated blood means the blood containing carbon dioxide instead of oxygen. Oxygenated blood means जिसमें ऑक्सीजन है, deoxygenated blood means जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, उसके बदले में इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा ब्लड. तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे जो होता है वो हमारे आर्टरीज में से फ्लो होता है, इसमें से आर्टरीज में से, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड आर्टेरियल ब्लड, arterial blood. So the color of this arterial blood or oxygenated blood is bright red. ऐसा कलर इसका bright red कलर होता है. Bright red कलर किसका है? Oxygenated blood means arterial blood, the blood containing oxygen. Such blood is bright red in color. While the deoxygenated blood means the blood flows to the veins. Such blood is called venous blood. Venous blood means the blood present in the veins or circulating through the veins. Veins carries deoxygenated blood. Remember that, but there are few exceptions. वो हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं. Venous blood जो होता है means deoxygenated blood. इस blood का कलर जो होता है it is a somewhat scarlet purple. Which type of color? Scarlet purple. Remember that. आपने कभी have you observed that have you donated blood? और अभी तक आपने ब्लड डोनेट नहीं किया होगा, देखा होगा तो आप देख सकते हो यहाँ से वेनस पंक्चर किया जाता है, उसमें से ब्लड बैग में ब्लड का एक्यूमुलेट किया जाता है, तो उसका कलर आप देखते हो तो वेनस ब्लड रहता है, इसका कलर स्कारलेट पर्पल. ओके, तो दिस मींस स्लाइटली ब्लूइश इन ब्लड. दैट्स व्हाई जो हमारी जो वेन्स है सुपरफिशियल these vessels you can easily palpate them or you can easily see them. These are the greenish in color. It is because of it contain deoxygenated blood, and this deoxygenated blood contain carbon dioxide. It is because of the blood present in the veins are scarlet purple in color. Okay, these are the general properties of the blood. Okay, so remaining part we will see in next lecture.